सिंगापुर में? नहीं, यू आईपीएल 2022 में आज होगी मैचेस की हाफ सेंचुरी पूरी, यानी कि 50th मैच खेला जाएगा बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। इंपॉर्टेंट ये मैच है क्योंकि दोनों ही टीम्स अपना पिछला मैच हार के आ रही है, लेकिन ब्रेबॉर्न में ये मैच खेला जा रहा है। वहां पे दोनों टीम का रिकॉर्ड 100% है। 4 में से 3 मैच जो खेले गए थे ब्रेबॉर्न में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वो दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे। सनराइजर्स ने यहाँ 2 मैच खेले हैं, दोनों में से दोनों उन्होंने जीते थे। लेकिन आज ये रिकॉर्ड बदलेगा क्योंकि एक लेके जाएगा लक और एक का जो है वो रिकॉर्ड बदलेगा। इस मैच में भी आगे लेके जाएंगे। जो पहले मैं वेलकम कर लूं जो हमारे शो में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आज, देवशीष सेन, प्रांतिक, वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। क्या देखते हैं? ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज 3 चेंजेस होने वाले हैं। जो अभी मैं देख रही थी सनराइजर्स में पृथ्वी शॉ भी मिस कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल से। प्रांतिक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, इंपॉर्टेंट ये मैच है। नमस्ते रीमा जी, हेलो देवाशीष। या आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, आई थिंक ये जो दो टीम्स है, दे हैड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नीज की। एसआरएच फॉर एग्जांपल, राइट फ्रॉम द ऑक्शन आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट कि दे विल हैव सच अ गुड स्टार्ट। आई वाज रियली बिटवीन द टू, फॉर एग्जांपल बैकिंग अ डीसी, जिस तरह से उनकी ऑक्शन रही है, जिस तरह दी उनकी जो युवा खिलाड़ी हैं। बट एसआरएच ऑब्वियसली हैड अ वेरी गुड स्टार्ट. DC has been hot and cold, but I think, as you rightly said, in the recent past, both of these teams have lost, and this is so critical क्योंकि margin इतना कम है to decide कौन आगे जाएगा. So I think it's a very interesting contest, and of course, as a fan, as someone who's watching it, I can't help but notice कि the Warner effect. Warner is going to play against SRH. Obviously, last time जो जितना हुआ, all the good and the bad. I think that contest is definitely in my mind कि to see how will Warner play against SRH. और अपने एक्सिस के अगेंस्ट परफॉर्म करने का मजा ही कुछ और आता है, और आज वो शायद देखने को भी मिलेगा। तो वार्नर के अंदर वो खुंदस होगी, वो घायल शेर होगा। लेकिन आज सनराइजर्स ने अभी टॉस जीत लिया है एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। 10 में से 9 टॉसेस यानी कि सनराइजर्स ने जीते हैं। केन विलियमसन शोले का सिक्का अपने पॉकेट में लेके चल रहा है देवशीष। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि ऑब्वियसली लक डज फेवर एज फार एज टॉस इज कंसर्न, बट सबसे बड़ा चीज मैं कहना चाहूंगी कि नटराजन चोटिल होने के वजह से ही इज आउट along with Washington Sundar, and also Bhubi is also not playing. So मतलब जो उनका जो bowling attack का जो जान है वही नहीं है आज। मतलब the Sunrisers Hyderabad bowling relies heavily on Bhubi, Natarajan and Umran Malik, तो इन 3 में से 2 नहीं है आज। तो that is a huge blow for Sunrisers, क्योंकि कार्तिक त्यागी he has not played so far in the IPL, पहले दफा खेलने जा रहे हैं आज, और नया फ्रेंचाइजी के तरफ से खेलेगा वो। और साथ में शॉन अबॉट, ही इज आल्सो प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अलोंग विद श्रेयस गोपाल। तो इट विल टेक अ लॉट। तो जितना दिल्ली को फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा सनराइजर्स को इन 3 बॉलर्स का ना रहने से। You're on mute, Rima ji. सॉरी। वेलकम जयदीप। सनराइजर्स ने टॉस जीत लिया है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। थैंक यू। 10 में से 9 टॉस। Rima ji is on the fly. Prantik is in San Francisco. Devashish is back to his own clothes. Gujarat has to ban him from wearing that t-shirt. It's a nice evening. But you never know. He could change the shirt. You never know. फर्स्ट हाफ के बाद चेंज कर लेंगे, फर्स्ट इनिंग के बाद ही। जयदीप, मैं सनराइजर्स की बात कर रही थी। टॉस तो ये जीत रहे हैं लेकिन पिछला मैच हारे थे। आज इंपॉर्टेंट मैच है लेकिन 3 चेंजेस भी देखने को मिले हैं। भुवनेश्वर कुमार नहीं है, टी नटराजन नहीं है, सुंदर नहीं है। तो ये टीम कहीं ना कहीं ज्यादा बैलेंस नजर नहीं आ रही। सामने वाली टीम में पृथ्वी शॉ भी मिस कर रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं कौन सी टीम यहाँ से ऑन पेपर हैवी साइड लग रही है? रीमा जी, ये 2 बहुत बड़े ब्लोज हैं हैदराबाद के लिए, बिकॉज उनके पास बॉलिंग है, उनका जो स्ट्रेंथ है। हमने काफी बार बात किया हम चारों ने कि ये जो टीम है ना सनराइज हैदराबाद, ये 11-12 की कट टू कट टीम है। तो इनमें से एक प्लेयर अगर मिस हुआ तो फिर भी बाकी मेकअप कर सकता है, लेकिन बॉलिंग यूनिट से अगर 3 मिस हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है मेकअप करना, because they were one team who were actually optimizing all their capabilities, all their strengths, and playing well. All of us did not, including me. I rated them the number 10 team after the auction.
But in spite of that, they've done better, because that just goes to show, and I always say this, that the match is playing on the ground, not on paper. But the paper is where you start, the discussion start, and the paper is what gives you a picture of what's about to come. So मुझे लग रहा है they're very, very depleted, and they will feel it to the bone, because उनका bowling, उनका strength है, उनका unit, उनका strength है. कौन डालेगा end में? नटराजन नहीं है, भुवी नहीं है. A lot to worry about for Hyderabad. और सामने वाली टीम में वरीज कम नहीं है. 3 चेंजेस हुए सनराइजर्स हैदराबाद में, 4 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स में. देवाशीष, नोकी आए हैं वापस, मनदीप आए हैं, रिपुल पटेल आए हैं, खलील आरिन. ये चेंजेस के लिए मैच था या आज पॉइंट्स के लिए मैच हो रहा है? पता नहीं है, क्योंकि दोनों टीम में 7 बदलाव. मैन सिटी रियल मैड्रिड लग रहा है एकदम. और ये इतना क्रूशियल मैच है दोनों टीम के लिए टिके रहने के लिए, टू गारंटी देयर प्लेस इन, अभी गारंटी टू बी ऑन द सेफर साइड एज फार एज प्लेऑफ्स इज कंसर्न. तो साथ में देखिए पृथ्वी ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ फैक्टर. ही डिड गिव दिल्ली सम डिसेंट स्टार्ट अलोंग विद वार्नर. मगर अक्षर इज अ ह्यूज ब्लो फॉर मी, क्योंकि अक्षर both with the bat and ball brings so much to that Delhi side. So that for me, Akshar Patel will be a huge blow. Mustafizur too, he has been really has done well so far in the season. So I think जितना नुकसान सनराइजर्स का भी हुआ as far as bowling is concerned, Delhi will also miss this gun bowlers in the likes of Akshar Patel and Mustafizur. हालांकि नोकिया का देखना है कि जब पहले दफा खेला था he was not fully fit. अभी ये देखना है कि has he fully recovered or not, or how good is he. So it will be an interesting match. तो प्रांतिक, यहाँ से हम ये समझे कि कोई भी जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही. पेपर में दोनों में चेंजेस आए हैं, एक नई टीम के साथ ऑलमोस्ट उतरे हैं 3 और 4. जी just on that, this is also the time of the tournament where the niggles turn to injuries. Because 8-10 गेम हो चुके हैं, 3-4 बाकी है, तो कभी कभार होता है, if your team is not doing well, if they're on the fringe, then you push that player, खेलो, and then time comes when you can't play anymore. I have seen this in KKR many years when we pushed somebody like a Brett Lee, although he was not 100%, because we were 4-3, 6-4. So 4 games to go. You're in the balance. You just might make it, might not. If you're absolutely in, no problem. If you're absolutely out, no problem. Problem is if you're in between. So tabhi, sometimes these teams, they push you, and then sometimes you end up missing matches. And also what happens is when one foreigner misses a match, then it changes the whole apple cart. जैसे मैंने आपको 2012 मनिंदर बिस्ला का स्टोरी बोला था. So एक आदमी बालाजी का स्टिफ हो गया, इसलिए 4 चेंज हो गया. So कभी-कभी वो भी होता है. In spite of the other person being fit, he said, "Boy, you have to miss out because we are playing a fast bowler, because Indian fast bowler miss out, because foreign fast bowler is playing, because somebody was injured, so he's playing." So the whole scenario changes. एब्सोल्युटली. और सिनेरियो चेंज हुआ है प्रांतिक. दोनों ही टीम अब नई नजर आ रही है. बॉलिंग अटैक स्ट्रेंथ थी सनराइजर्स हैदराबाद की, और बैटिंग में भी स्ट्रेंथ थी दिल्ली कैपिटल्स की. ये मैचअप देखा जा रहा था कि बॉलिंग सनराइजर्स की वर्सेस बैटिंग दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन यहाँ पे अब इक्वली बैलेंस मैच हम बोल सकते हैं. Well, मेरे हिसाब से somehow I feel the changes से जो नुकसान हुआ है होगा, मेरे हिसाब से for the SRH side probably is a bit more, because the kind of players, I mean नटराजन आप देख लीजिए, the way he has consistently picked wickets. So the SRH में जो Bhuvi, I mean Bhuvi, I was really hoping to see the contest between a Bhuvi and a Warner, or Bhuvi and some of the top order batsmen in DC. These are game changing bowlers. These are not just any bowlers who are here to just contain runs. These are wicket taking options with Natarajan even at the end. So yes, बदलाव दिल्ली में भी आए हैं, but I think relatively मेरे हिसाब से the loss probably, at least on paper, as Jadip said, as we begin, probably थोड़ी सी SRH में थोड़ी और भारी पड़ेगी मेरे हिसाब से at this juncture. जयदीप, डेविड वार्नर अपनी एक्स टीम के सामने वो स्पार्क नजर आएगा, वो पुरानी बातें याद आएंगी, और वो परफॉर्मेंस शायद और निखर के आएगी, जिसकी हमने कल शायद पोस्ट शो में बात भी की थी. जी, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना स्पेशल, आज मैंने एक स्टैट देखा कि शिखर धवन ने 15 में से 13 सीजन में 300 के ऊपर रन किया है, और 9 सीजन में 500 के ऊपर रन किया है. This goes to show, at the end of the day, ये दिखता नहीं है, because they are not the ones who will come and get a 28 ball, 60 like Andre Russell will, Prithvi will. ये दिखता नहीं है.
ये जो घर सफा रहता है ना, आप सुबह निकल जाते हैं मैच पे, आप आके देखते हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज इन प्लेस, इट्स लाइक दैट, द हाउस इज लुकिंग स्पैंकिंग क्लीन। आप कहते हैं कि हम तो ऐसे ही छोड़ के गए थे, लेकिन उसमें तो काम हुआ है, आपको देखता नहीं। So that's sort of work that these people do, and that's the reason why even and Shikhar Dhawan and David Warner are cut from the same cloth. Yeah, David Warner is both left-handers. One is foreigner, one is an Indian. But if you see their mode of play, it's very similar. Very similar. They play to their strengths. Of course, their strengths and weaknesses are totally different. One being Aussie, one being Indian. But the mode of play, the way they set up their innings, it's so good to see. And one thing that has worked for David Warner for him to become this player is that he was 70% of the batting in Hyderabad. उनको पता था वो रन नहीं करेगा तो नहीं जीतेंगे, तो that has made him this player. Shikhar was always this player. David Warner, first when he came, was the slam bang player, like every other young opener is when he played for Delhi Capitals back in the day, Delhi Daredevil, sorry. But right now, because of his stint in Hyderabad, he's more of a finished product. He can do both, and he is very vital. I think for Delhi to do well, if he can bat 13-14 overs, job done. ही हैज टू बैट। उनके पास इतना कुछ अभी बैटिंग इतना चल नहीं रहा है। मिचेल मार्श ने पिछले मैच में जरूर थोड़े से रन्स किए थे देवाशीष, लेकिन ऋषभ पंत की कैप्टनसी अच्छी हो रही है, पंत के मूव्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पंत की बैटिंग में वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। पिछले मैच में रन्स बनाए थे, बॉल चूज अच्छे से किया था, शॉट सिलेक्शन अच्छी थी, लेकिन वो कई बार एक आधा शॉट ऐसे करते हैं आउट ऑफ द मून आके खेलते हैं, वो उनको भारी पड़ रहा है। शायद थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप शॉट्स खेलिए, क्योंकि वही आपकी ताकत है, लेकिन एक आधा शॉट्स जो आप बना के खेलना चाहते हैं वो शायद आपको रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत, he hasn't scored a 50 yet, so that is somewhat uncustomary of Rishabh Pant, because we all know how good a batter he is. If he stays in the middle for 20-30 balls on his day, he will easily score somewhere in the region of 50-60. But he got starts. It's not that he has not done well. He has got starts. In at least 3 innings he has scored above 40, but he couldn't make it big. So the key for Delhi will be to have Rishabh scoring a big knock. Obviously, you have someone like a David Warner, who we all know is a gun player, and he would be looking to make a point, make a statement tonight against his former franchise. And what a record he has against when he used to play for Sunrisers. Almost above 4,000 runs at an average of almost 50. That is phenomenal. So I think, phenomenal. Yeah. So, but then the good thing for Delhi is that the last match, both Prithvi and Warner did not score, did not trouble the scorer. Despite that, the middle order has all fired, all got starts. Means be it a Robman Powell, be it an Akshar Patel, or a Rishabh Pant, or a Mitchell Marsh, everyone's contributed. So, but then someone from that middle order or a Warner needs to fire and needs to stay there and score a big knock. So that automatically will see them score around the region of 170, 180, which to me in these conditions it will be handy. टीम परफॉर्मेंस चाहिए होगी बेसिकली। अगर डेविड वार्नर पे आप डिपेंडेंट रहेंगे तो हर मैच वो आपको बना के दे नहीं सकते। लेकिन इस बैटिंग लाइनअप में अब थोड़ी डेप्थ नजर आ रही है, क्योंकि ललित यादव ने भी एक मैच में परफॉर्म किया था, रिपल पटेल बैटिंग करना चाहते हैं, शार्दुल ठाकुर बैटिंग करना चाहते हैं। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव, प्रांतिक 4 मैच जो जीते हैं दिल्ली ने, चारों में मैन ऑफ द मैच बने हैं। इन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ब्रेबॉन की जो विकेट है वो स्पिनर को असिस्ट भी कर रही है, तो अक्षर पटेल नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव पे आज बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल, I was just going to say that कि exactly Brabon में मैच हो रहा है। कुलदीप again fabulous, right? What a wonderful comeback as a whole. People who have watched Kulcha, I think उनके लिए IPL has been a pleasure. Both of these guys, the way they have come back for their respective different franchises, it's amazing. And Kuldeep, Kuldeep की IPL history has been fantastic. It's not just this particular season. And I think with the sort of the batsmen that he would be bowling against, I think Aj, I mean, for sure, he'll be needed even more. Without, Akshar, like as Debashish was saying, batting भी बहुत बढ़िया करी है, bowling भी करी है, but आज वो support नहीं रहेगा. So today, Kuldeep will have to go all out because उन पे काफी कुछ निर्भर रहेगा. And I think the good thing is pitch से सहारा रहेगा. And I think Kuldeep the batsman as well. We shouldn't forget that he's played some important knocks. So I think, and this is the time of the tournament, the business end of the tournament, where
every player has to contribute with bat and ball. And I think this is True. also a chance for people like Kuldeep to make a statement. आप अगर एक राशिद खान को देख ले, obviously Joydeep always says that every team today डर से देखते हैं कि यार ये 4 ओवर अगर 20-25-30 रन में भी निकल जाए तो कोई बात नहीं, बट वी ऑल्सो डोंट रियलाइज कि राशिद जिस तरह बैटिंग करते हैं, दैट पर्टिकुलर लास्ट ओवर, दैट द वे ही प्लेड. सो आई थिंक for players like Kuldeep or players like Umesh who want to make a statement to the selectors, bowling to high strength, but I think these people have the potential to bat. They've shown it, on occasions. But I think आज के games, आज के types of games में I think बहुत जरूरी to show that they are very very, I wouldn't say finished products, but they are wholesome, they're all rounded, so to speak. And when commit the hour, they need to sort of step up. And Kuldeep is that sort of player. दिल से खेलते हैं. Someone like Umesh Yadav, again, lot of passion. So I want to see Kuldeep really come to the party today again. Very well said. Yeah, और but पहले Kuldeep, बैटिंग कर रही है Rimaji, दिल्ली. जी, Rimaji, Kuldeep will also feel the absence of an Aksar for the simple reason absolutely. that when you're spin twins, then it's easier for you to operate. But now the opponents might say हम इसको 4-24 खेल लेंगे, उधर से हम लूट लेंगे जो दूसरा है. होगा नहीं होगा दूसरा बात है. That could be a strategy. So that is the reason why, like you fast bowl in pairs, you also both spin bowl in pairs. Because otherwise, if somebody from the other end is leaking 10, then his 424, it doesn't do the job. And then if he bowls 424, then his chances of picking wickets also diminish. So it's a double-edged sword, really, that Akshar is not there. प्रॉब्लम तो आने वाली है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिल्ली कैपिटल्स के पास है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा. लेकिन पहले वो बैटिंग कर रहे हैं आज. निकल गए तो आप गाड़ी लेके निकल गए दिल्ली में, तो आप तो सॉल्व करके ही घर जाएंगे, ये तो पता ही है हमें. मुझे लगा आज दिल्ली को जिताने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा. बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा चेंज कर लिया सिस्टम. लेकिन जॉयदीप, आपके साथ ही रहूंगी कि आज पहले बॉलिंग कर रही है सनराइजर्स, लेकिन एक न्यू बॉलिंग अटैक नजर आएगा. उमरान मलिक वही है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, अबॉट इनके पास है, कार्तिक त्यागी है, श्रेयस गोपाल जिसकी हम बात करते हैं, वो उनका भी जो रिकॉर्ड है आईपीएल में अच्छा है. इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन जब जब खेलते हैं इफेक्टिव इंपैक्टफुल नजर आते हैं. क्या स्ट्रैटेजी होगी सनराइजर्स की या केन विलियमसन की, जब आप इतने क्रूशियल मैच में न्यू बॉलर्स के साथ आ रहे हैं, न्यू प्लेयर्स के साथ आ रहे हैं, सामने वो बैटर्स हैं जो आईपीएल में अपना नाम रख चुके हैं? See, it's not such a bad thing because a lot of the foreign players wouldn't have played as Shreyash Gopal. No matter how much you see in video, आपको पता है कि वीडियो देखने और बीच में जाके खेलने में फर्क है. तो वो थोड़ा अननोन कमोडिटी होगा. ये डोमेस्टिक प्लेयर है, कार्तिक त्यागी डोमेस्टिक प्लेयर है, श्रेयस गोपाल डोमेस्टिक प्लेयर है. तो अगर कोई फॉरेनर को आप डाल रहे हो बीच में, मार्श को डाल रहे हो, किसी को डाल रहे हो जिसने आपको ज्यादा खेला नहीं, then there is that a little bit, and it's a 4 over spell. So if he's got you thinking for even 8 or 9 balls, you've got the upper hand on him. And he can bowl. I've seen him bowl some really good spells. I've seen him get really good batters out. And by foxing them, not caught a long on, by foxing them, he's got out. He's handy with the bat. He's very good in the field, very safe catcher. He did well for Rajasthan Royals whenever he played. And I'm glad that he's got a chance because he's won a lot of games for Karnataka. He's a savior for them. At 7, the amount of games he's won for Karnataka, I don't think any other player is at number 7. Because he's got a phenomenal record in first-class cricket. And with the bat, he plays as a bowler, but he's very handy with the bat. So he's the sort of guy. Leg spin आपको पता है रीमा जी, इससे आपसे बेहतर कौन जाने कि इनके पास जो है, हाथ से निकलते ही लगता है ज्यादा कुछ हो रहा है, जो हो रहा है उससे ज्यादा लगता है. मुझे कुंबले की याद दिलाते हैं जब ये बॉलिंग करते हैं. प्रांतिक, आप कुछ कहते हैं? Also I feel it's SRH, it's good that you have someone like a Williamson who at least seems unfazed. I think if any other captain with these 4 bowlers not there, I think काफी निराश होते, काफी टेंशन में आते. But I think someone like a Williamson just seemed like the man who will take everything in his stride. कि क्या कर सकते हैं आपको, you've been sort of dished out these cards, let's make the most of it. And अच्छा है, I mean different talents are getting a chance. And again, like Joydeep said, कि each of them come with some sort of an advantage. We may or not agree with the auction strategy, but they have been picked for a reason, and it's time for them to sort of come to the party. And again, it's about controlling the variables that you can. And I just think having someone like a Williamson as opposed to if I'd seen, for example, maybe a Pant or another captain, maybe a Shreyas Iyer, I think they would have perhaps looked at it differently or felt differently about the cards that have been dealt out. But I think Williamson probably will be in a good position to sort of marshal his resources and make the most of what he has today. देवाशीष, आप कुछ कहना चाहते थे? Yeah, I would just like to add on to the point. Perhaps it's high time that Sunrisers sent in Rahul Tripathi at the top.
instead of Ken Williamson, because he is the only two batsmen along with Venkatesh Iyer whose strike rate is below 100. that that's criminal. I mean, in power play, when the batsmen are looking at going after the bowlers and scoring some quick runs, and someone like a Rahul Tripathi, whose strike rate has been 172 so far in the tournament. So why not send him up the order? Because he has opened the batting for KKR and done well. So why not give it? Because there has been instance in the IPL, we have seen Mayank coming down out of form. He is coming down, sent in. So it's high time that Kane Williamson makes that adjustments. Try to be somewhat flexible, because T20 format, the need of the hour is to be flexible. Have a plan B when plan A is not working. You have been struggling. You have been found struggling in the tournament and trying to set up the tempo. So it's high time that you send in someone like a Rahul Tripathi at the top. ऐसे आपने बेस्टो के बारे में भी कहा था, बेस्टो तो आ गए, हम उम्मीद करेंगे राहुल त्रिपाठी भी आ जाए और इसी ग्राउंड पे अगेंस्ट केकेआर, जयदीप को अच्छे से याद होगा, केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 70 रन की वो इनिंग्स खेली थी और वो फॉर्म में भी हैं, और आपके पास जब फॉर्म का प्लेयर है ना तो आप उनको ले लीजिए। ऊपर स्ट्राइक रेट का बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। जयदीप एग्री करेंगे कि स्ट्राइक रेट डेफिनेटली लो है और पावर प्ले का यूज भी नहीं कर पा रहे विलियमसन? Yeah, I agree, and we've been talking about this for a while. The Johnny Bairstow swap, Mayank Helwa swap, we saw it's not going to happen, but it happened. You never know. Debashish always has inside information. He spoke about it that day, and that day it happened. So he's a smooth operator. But I really feel, I don't think that's going to happen. Because I mean, that one I was a little bit surprised. This one I'll be shocked if it happens. Because Ken Williamson also has to hold his own. If he was in great form, he was in decent form, I would have understood. Now he has to prove that he is. And at number 3, only problem is that if these two bat 4 overs, then Rahul Tripathi doesn't get 24 balls. So for me, that is the worry. Rahul Tripathi should be able to get 36 balls. He won't be all 36, I know, but whatever, he should be able to be in the middle for 36 balls. And then he could be, if he plays 18 balls out of those and he's 32 batting, he's got to start. And he can build on that. So Rahul Tripathi is not getting hundreds. He's not getting hundreds because he's not opening. Rahul Tripathi is a guy who could be in the power play be 40. So if you're power play 40 himself in 6 overs, then you can get 14 overs में 60 रन आराम से. वैलिड पॉइंट, लेकिन वो 5th ओवर में 6th ओवर में आ रहा है तो उनको ज्यादा टाइम लग रहा है ये 40 रन बनाने में, बिकॉज़ 5 फील्डर्स आगे के बाहर है. लेकिन जयदीप, अगर वो विलियमसन अपने आप को नीचे लेके आते तो मैं इसमें शॉक नहीं होंगी। आपने टीम के हित में डिसीजन लिया है, आप फॉर्म में चल नहीं रहे, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है नहीं। पूरा जिंदगी 3 ही तो खेले. जॉनी बेस्टो, वही तो डेविड वार्नर ओपन करता था, रिद्धिमान साहब डेविड वार्नर ओपन करता था, उन्होंने कभी ओपन नहीं किया. इसलिए मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों अगर वो 3 पे आते हैं इसमें शॉकिंग और सरप्राइजिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उनका बनता है। आप गेम नीचे से चलाइए, जब फील्ड खुल जाएगा सिंगल डबल का गेम खेलिए, फिर एक लूज बॉल को कन्वर्ट कीजिए, और यही आपका मंत्र भी रहा है सक्सेस का। रीमा जी, मैं जब टीम लगा मुझे लगा राहुल त्रिपाठी ओपनर, केन विलियमसन 3, मुझे ऐसा ही लगा था टीम देख के, बिकॉज जो केकेआर में ओपन कर रहा है वो उधर ओपन करेगा. आप 3 खेल रहे हो, आप 3 खेलो. बिल्कुल ट्रू. सो ये तो हो गए अब मैच के, हमने देख लिया कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, लेकिन दोनों ही टीमें जो है काफी चेंजेस करते आ रही हैं। तो अब क्या प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि पहले हम सोच के आ रहे थे कि दिल्ली कैपिटल स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या देवाशीष अभी भी यही मानना है आपका? प्रेडिक्शन टाइम. Yeah, I would say so, because जैसे कि प्रांतिक ने भी कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद, I think the bowling lacks that sting with the absence of the key bowlers, but then the Delhi Capitals, you never know, because they have both the teams have lost the previous game, so they would like to now get some wins behind their belt. So perhaps I would say that I would put my money on Delhi Capitals. Delhi Capitals. Prantik? Delhi Capitals. अगर Delhi 160 165 भी कर जाती है, मेरे ख्याल से that should be quite winnable for Delhi, I think, today. So I'm backing Delhi today. 2 वोट्स आ चुके हैं जयदीप. पिछले दिन आरसीबी के साथ गए थे, जय के साथ, आज वीरू के साथ दिल्ली के साथ जा रहे. वाओ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे पैनलिस्ट एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. शायद मुझे भी वेदा जी, रीमा जी कैसे सर्वाइव करना है.
चलो In इसी के fact, साथ अब Jaydeep, the if today actually अगर Williamson नीचे आते हैं, so imagine, I mean, I can imagine you being shocked, but I can imagine we also will have to acknowledge the power of Mr. Debashish Sen, because I think when he's making that claim, again, I'm saying not only does he have information, sometimes I wonder if he has, if he's actually a team consultant at the back end. So we shouldn't underestimate the powers of Mr. Sen here. Possible. Thank you. ट्रू. चलिए अब थोड़ा मैच का भी मजा ले लेते हैं. मैच के बाद मिलेंगे पोस्ट शो में. टिल देन एंजॉय द मैच एंड होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट और दिल्ली कैपिटल्स जीते. थैंक यू. बिल्कुल. Bye. Enjoy See ya. and drive safely. All right. Take care. Bye.